अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल 11 क्लास की फिजिक्स के। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर मैंने सेकंड ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बिल्कुल उसके मुताबिक आया। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जो पेपर में सवाल हो आएंगे तो आपका इस चैप्टर से जितना भी पेपर आएगा तो आप बिल्कुल आराम से पेपर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Question number 1, explain the term viscosity. Question number 2, why fog droplets appear to be suspended in air. Question number 3, explain the difference between laminar flow and turbulent flow. Question number 4, two robots moving parallel in the same direction are pulled towards each other. Explain. Question number 5, explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball. Question number 6, explain the working of carburetor of motor car using Bernoulli's principle. Let's moving towards the most important long question in this chapter. Question number 1, Bernoulli's equation, very important. Question number 2, equation of continuity is very important. Question number 3, terminal velocity is important. Let's moving towards the most important numerical problem of this chapter. Question number 1, 6.1, 6.2, 6.7 and 6.9. Examples 6.1 and 6.2. Best of luck and Allah Hafiz.